ओके। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके बैच में। और आज हम 16th सेंचुरी में, नहीं, 17th सेंचुरी के पोइट्री की बात कर रहे थे। मिल्टन की बात हमने लास्ट क्लास में किया था। और आज हम दो और ब्रांचेस ऑफ पोइट्री की बात करेंगे जो 16th सेंचुरी के बाद और रेस्टोरेशन के पहले, मतलब कुछ से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी जो फ्लरिश हुई थी उनकी। जो चार्ल्स का एज है, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जो है, उसको कैरोलिन पीरियड कहा जाता है। और कैरोलिन पीरियड की जो पोएट्री है, कैरोलिन पोएट्री, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैरोलिन पोएट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो ग्रुप होता है कैविलियर पोएट्स का, कैविलियर पोएट्री, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। कैविलियर पोएट्री एंड मेटाफिजिकल पोएट्री, राइट। ये कैरोलिन पोएट्री के दो अलग अलग ग्रुप हैं, मेटाफिजिकल एंड कैविलियर, राइट। पहले आइए कैविलियर की बात करते हैं और फिर हम मेटाफिजिकल पोएट की बात करेंगे। पहली बात तो ये कि कैविलियर्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली द कैविलियर स्कूल ऑफ पोएट्री was headed by Ben Jonson. Cavalier School of Poetry was headed by Ben Jonson, and Cavalier poets were called as sons of Ben, sons of Ben, या उन्हीं को ट्राइब्स ऑफ बेन भी कहा जाता था। सन्स ऑफ बेन और ट्राइब्स ऑफ बेन कहा जाता था कैविलियर्स को। और मेटाफिजिकल पोएट्री के जो फादर हैं, या मेटाफिजिकल पोएट्री जिसके आसपास से शुरू होती है, वो जॉन डन है। Ben Jonson was contemporary to William Shakespeare. He was a dramatist, he was a satirist, he was a poet, and he was a mask writer. He was the propagator of comedy of humors in theater, right? Or Ben Jonson was basically a classicist. Ben Jonson was the follower of, right, Horace, Virgil, and the writers of antiquity. उनके फॉलोवर थे। बेन जॉनसन प्रेफर्ड रेगुलरिटी, बेन जॉनसन प्रेफर्ड फिक्स्ड पैटर्न इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, राइट। फिक्स्ड पैटर्न की बात करते थे बेन जॉनसन, रेगुलरिटी की बात करते थे बेन जॉनसन। दो अ क्लासिसिस्ट, he was not without romantic feeling which breaks out now and then. He was in his famous song जो है उनका ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज, ये एक सॉन्ग है बेन जॉनसन का। ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज, राइट। अपनी आंख से आप मुझे क्या करिए, पी लीजिए। ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज एंड आई विल प्लेस विद माइन, राइट। दिस इज अ पॉपुलर सॉन्ग बाय बेन जॉनसन, right? Ben Jonson was a classicist in the field of drama, but he was not completely devoid of romantic feeling, and as this is apparent, this is very much visible from this line, drink to me only with thine eyes and I will place with mine, means ये दो लाइन ही पूरे कैविलियर पोएट्री को डिफाइन कर रही है, पूरी कैविलियर पोएट्री को बता रही है। वैसे कैविलियर का मतलब क्या होता है? अगर हम द वर्ड कैविलियर की बात करें, कैविलियर्स मीन्स हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स,
जैसे इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री जो है पैदल सेना होती है, वैसे कैवलियर्स जो है वो हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स हुआ करते थे। एंड ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन इंग्लैंड, राइट, देयर वर टू ग्रुप्स। एक ग्रुप वो था, वन वाज फेवर्ड बाय किंग चार्ल्स फर्स्ट, राइट, फेवर्ड बाय किंग चार्ल्स फर्स्ट, एंड they used to roam around the king in support of King Charles I on their horses, right, और उन्हीं को कैविलियर्स कहा जाता था। इन दिस वे जब हम पोएट्री की बात करते हैं, कैविलियर पोएट्री, then cavalier poetry can also be called royal poetry, right? Cavaliers were basically royalists, right? They were the supporters of King Charles I. King Charles I के वो supported थे। A cavalier was traditionally a mounted soldier or knight, but when the term was applied to those who supported Charles, it was meant to portray them as roistering gallants. The term was thus meant to belittle and insult. They were separate in their lifestyle and divided on religion from the Roundheads, right? जो सेकेंड ग्रुप था, जो अपोनेंट था किंग का, they were known as Roundheads because of their hair cutting style, right? Roundheads कहा जाता था। तो first those who were in support of the king, they were called royalists, they were called cavaliers, and those who were opponents of the king, they were called Roundheads. And the royalists, the cavaliers में से there were a few who were poets, वो पोएट भी थे और इसीलिए उनको कैविलियर पोएट्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनको कैविलियर पोएट कहा जाता है। क्लियर, इतनी सी बात है कैविलियर पोएट्री को आपको समझने में, राइट। फर्स्ट पॉइंट, कैविलियर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन। नंबर वन, बेन जॉनसन वाज अ क्लासिकल, सो cavalier poets also favored classical rules and epithets, and cavaliers were the supporters of the king. It means they were always, they wrote always in support of king. किंग के ही वो सपोर्ट में लिखते थे, इसीलिए वो कैविलियर पोएट्स कहे जाते हैं। और अगर हम द बेस्ट नोन कैविलियर पोएट्स की बात करें तो उसमें रॉबर्ट हारिक, रिचर्ड लवलेश, नाम लिख देता हूं क्योंकि आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो नाम का ही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स was not the part of cavalier poetry, right? या which of the following was not a cavalier poet? निम्नलिखित में से कौन है जो कैविलियर पोएट नहीं है? तो बेस्ट नेम कैविलियर्स में है रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेश, थॉमस करे, एंड सर जॉन सकलिंग। Thomas Curry and Sir John Suckling. Most of the Cavalier poets were courtiers with notable exceptions. For example, Robert Herrick was not a courtier, but his style marks him a courtier poet. Clear? Robert Herrick कैविलियर नहीं थे, रॉयलिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो कैविलियर पोएट्री की ही स्टाइल है। कैविलियर पोएट्री is different from the traditional poetry in its subject matter. क्लास ले रहा हूं सरकार। हाँ, टिकट कर लिया है, बस रेजिडेंस हमारा बनवा दो कहीं बस। ठीक है, रुकने का कहाँ है ये बता दीजिएगा। हाँ ठीक, राइट।
तो कैविलियर का जो मामला था, तो कैविलियर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोएट्स इन सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज इन मैनर. मैनर मीन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, और सब्जेक्ट मैटर दोनों में वो डिफरेंट थे. राइट, कैसे डिफरेंट थे कि जैसे अगर हम इनके पहले वाली पोएट्री स्पेंसर की बात करें, पोएट स्पेंसर की बात करें, तो स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, टू मच कॉम्प्लेक्स. राइट, उसकी एलिगरी जो है दैट इज नॉट सिंपल. आप कह लीजिए कि सबके समझ में आने वाली वो पोएट्री नहीं है. ऑलराइट, और कैविलियर जब आते हैं तो इंस्टेड ऑफ टैकलिंग इश्यूज लाइक रिलीजन, फिलोसफी एंड आर्ट्स, कैविलियर पोएट्री जो है एम्स टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल ग्रेटिफिकेशन ऑफ celebratory things, much livelier than the traditional works of their predecessors. ये कहाँ पर काम करते हैं, सिंपल चीजों को सेलिब्रेट करते हैं और उसी सिंप्लिसिटी को ही ये इंजॉय भी करते हैं. राइट, द कैविलियर पोएट्री एम्स टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल सेटिस्फैक्शन, सिंपल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी थिंग्स. राइट, मच लाइवलियर than their traditional predecessors. जो इनके परंपरागत पोएट थे, जो प्रीडिसेसर्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट बात करते हैं. और द इंटेंट जो होता है कैविलियर पोएट्स का, द इंटेंट वाज ऑफन टू प्रमोट द क्राउन एज दे वर रॉयलिस्ट. तो देयर प्राइम पर्पस वाज टू प्रमोट द क्राउन, प्राइम पर्पस वाज टू प्रमोट द किंग. तो वही इनका यहाँ पर टोटल पर्पस होता है. पार्टिकुलरली चार्ल्स फर्स्ट एंड कैविलियर्स जो है पोएट्स स्पोक आउटवर्डली अगेंस्ट द राउंड हेड्स. राउंड हेड्स के अपोनेंट्स थे, तो उनके खिलाफ बोलते थे. हु सपोर्टेड द रिबेलियन ऑफ द रंप पार्लियामेंट अगेंस्ट द क्राउन. राउंड हेड्स अगेंस्ट द क्राउन हुआ करते थे और पार्लियामेंट को सपोर्ट किया करते थे. और कैविलियर्स जो है दे वर टोटली अगेंस्ट दोज against the poets who were in support of the parliament. Cavaliers were the royalists. Cavaliers were in support of Charles I. Most Cavalier works had allegorical and sometimes classical references. They drew upon the knowledge of Horace, Cicero and Ovid. ये classical poets हैं और Ben Jonson was a classical poets. And Cavaliers were the sons of Ben. They are known as tribes of Ben. और इसलिए like Ben Jonson, Cavalier poets also followed the classical writers of antiquity, Horace, Cicero, Ovid, right, and Homer भी. इन सबको फॉलो करने वाले जो है वो Cavalier poets थे. They were rich in reference to the ancients as well as pleasing. Commonly held traits certainly exist in Cavalier poetry in that most poems celebrate beauty, love, nature, sensuality, drinking, good fellowship, honor and social life. Means they took the material from the existing society and molded them according to the precepts given to them. Right, instead of talking about philosophy, instead of talking about religion, instead of talking about roundhead, instead of talking about Anglicans and Protestants, they simply focused on love, honor, joy, nature, sensuality, drinking, food, right, good fellowship. इन्हीं सब पर वो फोकस करते हैं टोटल. And Cavalier poetry is closely linked to the royalist cause in that the main intent of the poetry was to glorify the crown. Crown को ही glorify करना main intent था Cavalier poets का. Right? Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Curry and John Suckling. These four are the pillars of Cavalier poetry. Right? इन्हीं को Cavalier poetry का पिलर कहा जाता है. और नॉट ओनली दे आर सेट बट इन फैक्ट दे वर द पिलर्स ऑफ कैविलियर पोएट्री. राइट, वो कैविलियर पोएट्री के पिलर्स हैं. क्लियर.
अब अगर आप एक एक पोएट की हम इसमें बात करें, नंबर 1 पर जो नाम आता है कैविलियर पोएट्स में, वो नाम है किसका? वो नाम है उस व्यक्ति का जो खुद एक रॉयलिस्ट नहीं था। खुद एक रॉयलिस्ट नहीं था मतलब लाइक थॉमस किड, जैसे कि थॉमस किड जो है यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे, लेकिन थॉमस किड यूनिवर्सिटी विट्स ना होने के बावजूद भी his his theatrical characteristics were very much similar to those of the university wits, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। और इन द सेम वे रॉबर्ट हैरिक was not a cavalier, he was not a royalist, but his poetic styles are very much similar to those of Lovelace, Carey and John Suckling, and that's why he is also kept in the group of cavalier poetry. Yes, Bubbly, whatever I write on board, you have to note them down. Robert Herrick is best known for his poetic anthology, Hesperides. Hesperides is a book of poems. It is a book of poetry, and Robert Herrick is known for this Hesperides. Sometimes it is also pronounced as Hesperides. Right? It was a book of poetry published in 1648. Right? And this collection of 1200 lyrical poems. Right? This collection had 1200 lyrical poems. So you can guess the length of the poems. Right? It is replete with one of the most important features of classical poetry, and that was carpe diem. Right, that was carpe diem. And this book, Hesperides, was replete with carpe diem sentiments. The title Hesperides का मतलब क्या होता है? The title refers to Hesperides, nymphs of evening in Greek mythology, or Hesperides include to the virgin to make much of time. What is the meaning of the term? What is the meaning of the phrase carpe diem? And who was the writer, who was the poet who invented the phrase carpe diem? किसकी बात हो रही है कार्पे डीम से? कार्पे डीम सेंटिमेंट्स होता क्या है? एक्चुअली कार्पे डीम इज अ लैटिन aphorism, right? Carpe diem is a Latin phrase and Latin aphorism, and the phrase was invented, the phrase was coined by Latin poet Horace, right? Latin poet था Horace. Horace ने carpe diem term जो है phrase invent किया था, coin किया था, and Latin में, and in English carpe diem means seize the day, right? Carpe diem means seize the day. This is a very important question for UGC NET as well as for DSSB, PGT and KVS PGT examination, right? Carpe diem. Carpe diem, the phrase was coined by Horace, the Latin poet, and in English carpe diem means seize the day. Seize the day means grab the opportunity that is available to you at present. जो आपके पास तुरंत अवेलेबल अवसर है, आप उसका फायदा उठाइए, ये होता है seize the day, right? रोमन पोएट होरेस के वर्क से लिया गया था. Horace is known basically for his odes, as in English you are aware of three types of odes. Pindaric ode started by the Greek poet Pindar,
Horatian ode started by the Roman poet, Latin poet Horace, and then irregular ode started by the English poet Abraham Cooley. Right? So Horace was the writer of odes, and in his odes he invented the phrase carpe diem, and in English it means seize the day, enjoy the opportunity available to you. Carpe is the second person singular present एक्टिव इंपरेटिव ऑफ कार्पो, उन सब पर आप बिल्कुल नहीं जाइए. राइट, कंटेम्परेरी जो है राइटर्स पर आते हैं. यहां जो है फिलहाल जो पोयम सबसे ज्यादा फेमस है कार्पे डीम के जॉनर में, वो एक पोयम रॉबर्ट हारिक की है, और रॉबर्ट हारिक की पोयम का नाम था टू द वर्जिन्स. To the virgins to make much of time. To the virgins to make much of time. This is a poem under the category of carpe diem, seize the day. The poem is in the genre of carpe diem, Latin for seize the day, and this poem was also written, also published in Hesperides in 1648. Out of the 1200 lyric poems of Hesperides by Robert Herrick, this poem was also one. ये भी उसी में से एक है जिसका नाम है टू द वर्जिन्स. राइट, टू मेक मच ऑफ टाइम. राइट, द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट द मीनिंग ऑफ कार्पे डीम, टू मेक much of time. And here in this poem, Mr. Robert Herrick writes, gather you rosebuds while you may, old time is still a flying. Right, the poem starts with a very significant line, gather you rosebuds while you may, enjoy the opportunity that is available to you. Gather the rosebuds while you may, old time is still a flying. Time is flying. Right, and this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Right, जो फ्लावर आज स्माइल कर रहा है, जो फ्लावर आज फ्रेग्रेंस स्प्रेड कर रहा है, definitely it will die tomorrow. It means you do not have time to waste, you do not have time to wait, but you have to gather the rosebuds that are available to you today, because time is running out. Time running out हो रहा है, and this same flower that smiles today, tomorrow is tomorrow will be dying. This glorious lamp of heaven, glorious lamp of heaven is the sun. This glorious lamp of heaven, the sun, the higher he is getting, the sooner will his race be run, and nearer he be so setting. जो glorious lamp that is the sun shining in the sky here, it is also running very fast, and in the evening we will see that the sun is setting. And through this stanza he compares the entire life. Man has grown up, he has become young, and time is not stopped, it's running out, and very soon we will see that we have grown old, and now we have to depart from this world. So we cannot, we do not, and we should not wait for future, and let's gather the rosebuds that while we may. Right, जब तक हम कर सकते हैं तब तक उनको इकट्ठा करें. और फिर आगे लिखता है, the age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent, the worse and worst times still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while you may, go merry, for having lost out but once your prime, you may forever tarry. Right, आप forever जो है वेट ना करिए, आप अपना काम करिए, enjoy the time
grab the opportunity that you have been given as time will never come again. दोबारा से उसको आना नहीं है, और जब दोबारा से उसको आना नहीं है तो अभी उसको ग्रैब करके रखिए. कार्पे डीम इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, बट कार्पे डीम इज अ जॉनर ऑफ पोएट्री. ये पोएट्री का एक टाइप है जिसमें पोएट किसकी बात करता है? सीज द डे की बात करता है. राइट, सीज द डे मीन्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी की बात करता है विदाउट वेस्टिंग टाइम. टाइम वेस्ट ना हो, उसको ग्रैब करिए, यूटिलाइज योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन गिवन a chance for the preparation of UGC NET examination and seize the day. Carpe diem says that you should not waste your time and you जो है क्या करना चाहिए आपको? You should prepare yourself for the best today itself. आज ही अपने आप को प्रिपेयर करिए, कल की चिंता ना करिए. बिकॉज द जो ग्लोरियस लैम्प है, जो सन है ना, द सन मीन्स लाइफ, इट इज रनिंग आउट वेरी फास्ट and soon you will grow old and you will be of no use. So you have to study today, you have to enjoy the opportunity that you have been given today. उसी को आप enjoy करिए. Don't wait means don't postpone work. Right, the carpe diem is against the postponement of work. Carpe diem means carpe diem is against the deferral system. Deferral system के against होता है, वो एक पर एक चीजें टालता नहीं है, बल्कि क्या करता है? इट स्टिक्स टू द प्रेजेंट. प्रेजेंट की बात करता है. इन द सेम वे एक और पोएम है जिसका नाम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस. राइट, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस इज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डीम. To his choir mistress, written by Andrew Marvell. Right, a magnificent poem of this genre, Carpe Diem, where जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो अपनी बिलवेड को बता रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ. राइट, उसको वहां पर बता रहा है कि जल्दी करिए, टाइम पास आप बिल्कुल नहीं करिए, अदरवाइज क्या होगा? टाइम पास हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी. राइट, क्योंकि टाइम जो है इट इज वेरी मच लिमिटेड, बहुत कम टाइम है, और जब एक बार टाइम चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा. राइट, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस एक वैसे तो मेटाफिजिकल पोएम है, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, बट the poem comes under the category of this one, a carpe diem. वहां पर कहता है his beauty, his lady जो है, she is a quiet, she is shying, शर्मा रही है, और कहता है पोएट, had we but world enough time, this quietness lady was no crime. Had we but world enough time, this quietness lady was no crime, but we have the limited time. इसलिए जो आपका quietness है, जो shyness है, it is a crime. Right, we अगर हमारे पास दुनिया भर का समय होता तो हम क्या करते? तब बोलता है we would sit down and think which way to walk to pass our long love's day. हम बैठते, सोचते, विचारते कि कहाँ जाना है और अपना दिन समय कैसे व्यतीत करना है, और फिर कहाँ पहुंच जाते? फिर कहता है दाऊ बाई द इंडियन गंगेज साइड. एक बार नेट में क्वेश्चन भी आया था कि इन विच पोएम देयर इज अ रेफरेंस ऑफ द इंडियन रिवर गंगा. तो इंडियन रिवर गंगा का रेफरेंस है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में, वेयर द पोएट सेज दाऊ by Indian Ganges side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow vaster than empires, and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze.
200 to adore each breast, but 30,000 to the rest, and age at least to every part, and the last age should show your heart. For lady, you deserve this state, nor would I love at lower rate. अगर हमारे पास समय होता तो एक एक एज, एक एक बॉडी के आपके पार्ट्स को मैं डिफाइन करता, उसकी प्रशंसा करता, बट आई हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए डोंट शाई, डोंट बी अ क्वाय, you should be very frank, come to me and let's make love. Right? So this was the poem Carpe Diem. Clear? And I hope कि there would be no problem now in the field of Carpe Diem. Carpe Diem में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. Hesperides to the Virgins to make much of time by Robert Herrick, and then जो है to his choir mistress by Andrew Marvell. And the next poet of importance जो है वो यहाँ पर है रिचर्ड लवलेश. एंड रिचर्ड लवलेश की एक पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पोयम में उसकी लाइंस आ जाती हैं. रिचर्ड लवलेश की, और वो रिचर्ड लवलेश की पोएम कौन सी है? टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स. Richard Lovelace, actually he is famous for his two poems. Best known poem to Althea from prison, और एक पोएम टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स. To Althea from prison was written in 1642 and one of Lovelace's best known works, and its final stanza's first line is often quoted. और वो फाइनल स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है, where he focuses on the importance of the stone, कहते हैं कि stone walls do not a prison make. Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. न तो पत्थर की दीवारें जेल बना सकती हैं और न तो आयरन के बार्स केज बना सकते हैं, पिंजड़े बना सकते हैं. माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट टेक, माइंड्स इनोसेंट and minds innocent and quite take that for an hermitage. Minds innocent and quite take that for an hermitage. Right? The lines were written when he was imprisoned in the jail, and in the jail
He wrote the poem to Althea from prison. Or here he writes, stone walls do not a prison make. You cannot imprison anyone. You can imprison anyone physically, not mentally. Those who are strong by mind, those who are innocent, and those whose mind is very quiet, that stone walls, that solitude becomes a hermitage for him. Right? वो hermitage बन जाता है, वो उसके लिए एक cottage बन जाता है, and in that cottage he writes beautiful songs, he writes beautiful poems, and he writes philosophical works. Right? Stone walls do not a prison make, nor irons bar a cage. Minds innocent and quiet take that for an hermitage. Very, very important lines for your examination. Note them down and you could find these lines in your examination. Right? आपको वहां पर मिल सकती है, पूछा जा सकता है कि ये कहां से लिया गया है. क्लियर? चलिए बताइए, फिर हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं. Thomas Curry, another important poet of Cavalier poetry, is known for his poem True Beauty. Thomas Curry. इनको आप कैर्यू पढ़ते हो, but he is pronounced as Thomas Curry and he is known for his poem He is famous for his poem True Beauty. Right? He didn't write the only poem, but he wrote many poems. Famous for his work, famous for his poem The True Beauty. Thomas Curry was an English poet among the Cavalier group of Caroline poets. His collection was titled as Poems by Thomas Curry, Esquire. Poems by Thomas Curry, Esquire. It was the name of his poetic collection. And not merely poetic collection, but it was a collection of lyrics, songs, pastorals, poetic dialogues, elegies, addresses and occasional poems. पूरी वर्क उसी में था. Most of the pieces are fairly short. और उसमें जो longest poem है उसका नाम है A Rapture. And A Rapture, the longest poem of the group, consists of 166 lines. Right? 166 lines हैं थॉमस करे के पोयम जो है द रैप्चर में. And well over half are under 50 lines. The subjects are various
A number of poems treat love, love making, and feminine beauty. Several of the poems, including an elegy upon the death of the dream of the Dean of Paul, Dr. John Donne, means डॉक्टर जॉन डन के डेथ पर एलिजी भी लिखा था थॉमस करे ने, राइट. एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ an elegy upon the death of the Dean of Paul, Dean of Paul, Dr. John Donne. Right, this is an elegy on John Donne written by Thomas Curry. राइट, आइए अब मेटाफिजिकल पोएट्स पर आते हैं. Metaphysical poetry. First of all, what is the meaning of metaphysical poetry? कहते किसे हैं metaphysical poetry? The meaning of metaphysicals. Before starting the metaphysical poetry, we should first understand the meaning of metaphysical. John Donne didn't start the field of metaphysical poetry. Shakespeare had also written a poem, The Phoenix and the Turtle. And The Phoenix and the Turtle is said to be a metaphysical poem. Metaphysics. Meta means beyond. Meta means beyond, and physical means physical world. A poem that deals with a world that doesn't exist. ऐसे वर्ल्ड से डील करती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या जो ये वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की बात करता है, उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है. एंड इट वाज जॉन ड्राइडन who coined the phrase metaphysics and wrote Donne affects metaphysics. Donne affects metaphysics. This was the line by John Dryden. And later, after 100 years, Dr. Samuel Johnson coined the phrase metaphysical poets. Metaphysical poets in the biography of Abraham Cooley. Abraham Cooley was one of the metaphysical poets, और उन्हीं की biography में Dr. Samuel Johnson is credited to have written the biography of 52 poets, और one of the 52 poets की biography में अब्राहम कुले की biography है, और उसी में ही coined the phrase metaphysical poets. Metaphysical poets. And later
once again after 200 years, it was T.S. Eliot who wrote the essay Metaphysical Poets. The difference between Dryden Johnson and T.S. Eliot was Dryden and Samuel Johnson used the term metaphysical in a very derogatory sense, in a very derogatory manner. But it was T.S. Eliot who brought metaphysical poetry back to the world, or he popularized metaphysical poetry as great poetry, not in a derogatory sense, but in very appreciative terms, बहुत एडमिरेबल टर्म्स में उसको यूज किया था. डॉक्टर जॉनसन ने तो ये कहा था कि जो ये पोएट्स हैं, डॉक्टर जॉनसन ने बोला कि द मेटाफिजिकल पोएट्स आर या वर मेन ऑफ लर्निंग. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का क्या बोलने था कि मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ लर्निंग. वो पढ़ाकू आदमी है. And to show their learning was their whole endeavor, right? And to show their learning was their whole endeavor. अपनी लर्निंग को ही शो करना उनका पूरा प्रयास होता है. ये डेफिनेशन थी मेटाफिजिकल पोएट्स की डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सेज दैट मेटाफिजिकल पोएट्स वर men of learning and to show their learning was their whole endeavor. They copied neither nature nor life. Their thoughts are often new, or but they are new but seldom natural. Natural नहीं होते हैं. They are not obvious but neither they just, and the reader, far from wondering that he missed them, wonders more frequently by what perversity of industry they were ever found. Metaphysical poets were men of learning, and to show their learning was their whole endeavor. They were sometimes new, but they were never natural. They copied and pasted, and they used far-fetched images, far-fetched similes, and they made comparison between two uncomparable things. ये सारी डेफिनेशन थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की रिगार्डिंग मेटाफिजिकल पोएट्री, राइट. मेटाफिजिकल पोएट्री men of learning थे मेटाफिजिकल पोएट्स. और बेसिकली डॉक्टर जॉन डन जो थे, he was against the complexity of Spencer, against the जो है कॉम्प्लिसिटी के साथ जो कॉम्प्लिकेटेड एलिगोरिकल वर्सेस थे और जो भारी भरकम वर्सेस थे उसके अगेंस्ट थे. और इसलिए डॉक्टर जॉन डन ने कोलोक्वल लैंग्वेज यूज किया अपनी पोएट्री के लिए, अपनी पोएम्स के लिए. और इन कोलोक्वल लैंग्वेज ही कंबाइंड बोथ द नेचुरल वर्ल्ड, द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड. मींस ही लाइक शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को इंटरमिंगल किया था, इन द सेम वे जो है डन ने क्या इंटरमिंगल किया. डन इंटरमिंगल्ड फिजिकल वर्ल्ड एज वेल एज रिलीजियस वर्ल्ड. और कहते क्या है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, राइट. फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. और जो उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं मेटाफिजिकल पोएट्री में, उसमें द कैनोनाइजेशन, द फ्ली, right, the flea, the canonization, death, be not proud, go and catch the falling star. ये सब उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो मेटाफिजिकल पोएट्री में आती हैं, जो मेटाफिजिकल कैटेगरी में रखी जाती हैं. The newness of Donne's poetry strongly appealed to the tastes of the time, and for a whole generation from 1630
to 1660, the metaphysical style was widely, if not universally, practiced. We have seen how even the secular cavalier poets who called themselves sons of Ben were not without the traces of Donne's influence. जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी कि डन के जो है कार्पेडीम जो पोएम है एंड्रू मार्वेल की, वो मेटाफिजिकल पोएट है, बट कार्पेडीम उन्होंने लिखा है. और रॉबर्ट हैरिक, दो ही वाज अ कैवेलियर पोएट, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सेकुलर, बट वो भी मेटाफिजिकल पोएट्री में आकर इंटर मार जाते हैं. द डायरेक्ट डिकेडेंट्स ऑफ डन, the direct actually descendants of Donne, however, were the religious poets Herbert, Crashaw, माइकल जो है वॉन और ट्रहर्न. इनको जो है मेटाफिजिकल पोएट्स की कैटेगरी में रखा जाता है. बेसिकली दे वर रिलीजियस पोएट्स एंड दे टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड दैट वाज बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. राइट, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के बियॉन्ड था उसी की बात वो करते हैं. कौन कौन से लोग थे मेटाफिजिकल पोएट्स में, नाम उनका नोट कर देता हूं, आप भी उनके नेम्स जो है लिख लीजिए. The first name is very much clear. It was Donne. Then Richard Crashaw. ये थे मेटाफिजिकल पोएट्स. जॉन डन, द चीफ ऑफ द मेटाफिजिकल्स, हेनरी वॉन, एंड्रू मार्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कुले, as well as to a lesser extent George Herbert and Richard Crashaw. Their work जो है is a blend of emotion and intellectual ingenuity. Emotion plus intellectual ingenuity. Emotion plus intellectual ingenuity equals to metaphysical poems. और इसी इंटेलेक्चुअल इंजीन्यूटी को ही मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है. राइट, इसी को मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है. दैट इज बाय द समटाइम्स वायलेंट योकिंग टुगेदर ऑफ apparently
unconnected ideas and things, so that the reader is startled out of his complacency and forced to think through the argument of the poem. Metaphysical poetry is less concerned with expressing feeling than with analyzing it. Metaphysical poetry चीजों को एनालाइज ज्यादा करती है, इमोशंस को, फीलिंग्स को एनालाइज ज्यादा करती है, उस पर फोकस करने के बजाय. विद द पोएट exploring the recess of his consciousness, the boldness of the literary devices used explicitly as obliquity, irony, and paradox are often reinforced by a dramatic directness of language and by rhythms derived from the living speech. Metaphysical poets adopted the colloquial language, adopted the common language spoken by the common folk, and wrote poetry in that language so that they could be comprehended by one and all. Right? They are known for their conceit, they are known for their high learning, and they are known for blending of emotion and intellectual ingenuity. Thank you so much for paying your attention. Thank you so much for bearing with me. Today I close here Renaissance. Next class will start with the neoclassical period. Thank you so much. Good luck. Bye bye.